everyone. So our today's topic of discussion is cell death. In last lecture, we have learned about cell injury and type of cell adaptation. Now we are going to discuss about the cell death. So in what we have learned until now, first we are going to revise all things. So what happen in normal cell? In normal cell, there is homeostasis. Okay. So normal cell is in the homeostasis when there is any kind of stress, so the cell will undergo adaptation. We have seen different type of adaptation, or any injurious stimuli will lead to the cell injury. सो देयर आर कंडीशन जिसमें क्या होता है कि जब कोई स्ट्रेस आता है या फिर एनी टाइप ऑफ इंजीरियस स्टिमुलस आता है तो सेल क्या हो जाएगी, उसमें सेल इंजरी होगी, या फिर अडेप्टेशन जो होता है वो सेल अडेप्ट नहीं कर पाती तो भी क्या होगा, सेल इंजरी होगी. सेल इंजरी जो होती है जो कि माइल्ड होगी या फिर ट्रांजिएंट होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रिवर्सिबल टाइप ऑफ सेल इंजरी होती है जो कि नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो सकती है. जबकि सीवियर होती है या फिर प्रोग्रेसिव होती है सेल इंजरी तो वो कन्वर्ट होगी इरिवर्सिबल टाइप ऑफ सेल इंजरी में. सो what happen when cell injury is severe or progressive, it will lead to the irreversible type of cell injury. In irreversible type of cell injury there are two mechanisms of the cell injury. So the cell irreversible type of cell injury will lead to the necrosis and apoptosis. Necrosis and apoptosis are the type of irreversible cell injury which will lead to the cell death. So this was all about revision of the things we have learned until now. So we are going to discuss about the necrosis first. So what is the necrosis? Basically जो necrosis होता है वो pathological cell death होता है. Necrosis pathological होता है जो कि irreversible type of cell death होता है. So necrosis is a type of the pathological death. What are the mechanism of the necrosis? So basically necrosis जो होता है इसमें दो टाइप की mechanism involved होती है. एक तो जो प्रोटीन होगा उसका डीनेचुरेशन होगा, तो डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन्स. सेकेंड मैकेनिज्म होती है वो होता है एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द सेल. तो किसी सेल का अगर एंजाइमेटिक डाइजेशन होगा तो उससे जो प्रोसेस लीड होगी उसे हम बोलेंगे नेक्रोसिस. सो सेकेंड इज द एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द सेल. सो दिस वाज द मैकेनिज्म. ड्यू टू दिस मैकेनिज्म व्हाट हैपन, डैमेज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, जिस वजह से सेलुलर कंटेंट जो होंगे वो लीक आउट हो गए सराउंडिंग में. अब अगर सेलुलर कंटेंट लीक आउट होगा तो उससे क्या होगा कि जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस होगी और उससे सेल डेथ होगी. तो कंटेंट लीक आउट ऑफ द सेल, तो सेल के बाहर क्या होगा, कंटेंट लीक आउट होंगे, इससे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगी और उससे क्या हो जाएगा, एक्सीडेंटल सेल डेथ. सो दिस वाज द ऑल अबाउट द process of our mechanism of our necrosis. So now we are going to discuss about something more. So what are the type of the necrosis? So basically necrosis जो होता है वो 4 टाइप का होता है. बेसिकली अगर अपन देखें तो इसके वेरियस टाइप भी हो सकते हैं. तो नेक्रोसिस हैज़ 4 टाइप. फर्स्ट टाइप इज कोगुलेटिव नेक्रोसिस, सेकंड टाइप इज लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, थर्ड इज फेट नेक्रोसिस, फोर्थ इज केसियस नेक्रोसिस एंड द फिफ्थ टाइप इज फिब्रिनोइड नेक्रोसिस. So there are different type of the necrosis. So first is coagulative necrosis. Second type of necrosis we can see, this is liquefactive necrosis. The third type is caseous necrosis. Fourth type is fat necrosis, and the fifth is gangrenous necrosis. Apart from this necrosis, fibrinoid necrosis is also present. So this was the types of the necrosis. Now we are going to discuss about the difference of these all type of necrosis through a tabulated form, so you can easily remember things at the right time at your revision. So what are the different things we are going to discuss about? First we are going to discuss about 3 type of necrosis, that is coagulative necrosis, liquefactive necrosis and caseous necrosis. What are the difference in them? So coagulative necrosis, first we are going to discuss about the definition of the coagulative necrosis. So coagulative necrosis is basically related to the infarct in any organ. So what is coagulative necrosis? Infarct is a localized area of the coagulative necrosis. Localized area of coagulative necrosis. So in infarct we can see coagulative necrosis, which is the localized area. What type of the gangrene we can see in coagulative necrosis? So there is basically dry gangrene. So dry gangrene is being seen in the coagulative type of necrosis. Next is our liquefactive necrosis. So liquefactive necrosis is basically enzymatic degradation of the cell, due to which the cell boundaries are not preserved. So
when enzymatic degradation of cell occur. Enzymatic degradation of cell occur of cell, then it will lead to coagulative type of necrosis. Lead to coagulative necrosis. Okay. So coagulative necrosis is basically example of wet gangrene. So it is a wet gangrene. So we have discussed about the two type of necrosis, coagulative necrosis and liquefactive necrosis. The third type is caseous necrosis. Basically in caseous necrosis we can see cheese-like appearance as shown on the word itself. So cheese-like cheese-like appearance. चीज लाइक अपीयरेंस होता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस में, जो बेसिकली हमें देखने को मिलता है ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन में, सीन इन टीबी इन्फेक्शन. सो मेनली चीज लाइक नेक्रोसिस आल्सो नोन एज केजियस नेक्रोसिस. और केजियस नेक्रोसिस जो होता है वो दो नेक्रोसिस का कॉम्बिनेशन होता है, डेट इज कोगुलेटिव नेक्रोसिस एंड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस. कॉम्बिनेशन ऑफ coagulative plus liquefactive necrosis. So two type of necrosis combinedly form the caseous type of necrosis. Next we are going to see about the occurrence. So what are the site where this type of necrosis commonly found? So first we are going to discuss about the coagulative necrosis. So coagulative necrosis is basically found in all type of solid organs, ठीक है, except brain. So found in all solid organs except brain. सो ब्रेन को छोड़कर जो भी सॉलिड ऑर्गन होंगे उन सब में हमें देखने को मिलेगा कोगुलेटिव नेक्रोसिस. व्हाट आर द ऑर्गन? डेट इज लिवर, spleen and other organs. So these are the solid organ we can find coagulative necrosis. Next is our liquefactive necrosis. So basically liquefactive necrosis is found in the brain, found in brain. लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जो होता है वो बेसिकली ब्रेन में प्रेजेंट होता है. इसके अलावा जो ये होता है वो फंगल इन्फेक्शन में भी हमें देखने को मिलता है, फंगल इन्फेक्शन और एब्सेस फॉर्मेशन. And any kind of abscess formation, we can see this kind of necrosis, abscess formation. Third type of necrosis, caseous necrosis, is basically found in the lung biopsy of the TB. So lung biopsy of the tuberculosis. Apart from this, disease is found in the TB lymph node in TB infection, lymph node in TB infection. सो टीबी इन्फेक्शन में जो लिम्फ नोड होते हैं उसके अंदर भी हमें केजियस नेक्रोसिस देखने को मिलता है. अगर अपन थर्ड देखें माइक्रोस्कोपिक फीचर, तो माइक्रोस्कोपिकली अगर अपन देखें तो क्या हमें देखने को मिलेगा? सो माइक्रोस्कोपी में जो केजियस नेक्रोसिस होता है, सॉरी कोगुलेटिव नेक्रोसिस, तो माइक्रोस्कोपी में जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगा उसमें हमें फॉलोइंग फीचर देखने को मिलेंगे. एक तो जो सेल बाउंड्रीज होती है प्रिजर्व होती है, सेल बाउंड्रीज आर प्रिजर्व. तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होगा? जो सेल बाउंड्रीज होगी वो प्रिजर्व होगी. इसके अलावा हमें डेंसली इओसिनोफिलिक अपीयरेंस देखने को मिलेगा, डेंसली इओसिनोफिलिक. अपीयरेंस. इसके अलावा हमें मोथ ईटन अपीयरेंस भी देखने को मिलता है ड्यू टू ग्लाइकोजन लॉस. मोथ ईटन अपीयरेंस. So this was a microscopic feature of coagulative necrosis. Next is our liquefactive necrosis. So in liquefactive necrosis, the cell boundaries are not preserved. Cell boundaries
आर नॉट प्रिजर्व्ड। सेल बाउंड्री जो होगी वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होगी, प्रिजर्व नहीं होगी। थर्ड जो होता है हमारा केजियस नेक्रोसिस, तो उसकी माइक्रोस्कोपिक फीचर जो होगा हमें चीज लाइक मटेरियल या येलोइश कलर का देखने को मिलेगा। चीज लाइक येलोइश मटेरियल, येलोइश मटेरियल नेक्रोसिस भी बोल सकते हैं इसको। तो चीज लाइक येलोइश नेक्रोसिस हमें देखने को मिलेगा किसमें, केजियस नेक्रोसिस में। अब हम इसके एग्जांपल के बारे में डिस्कस करें। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द कोगुलेटिव नेक्रोसिस। तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस में जितने भी सॉलिड ऑर्गन है उन सबके इन्फार्ट को अपन डिवाइड कर सकते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस में। तो इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल हो जाएगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो होता है वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। इसके अलावा अगर अपन देखें केसियस नेक्रोसिस, तो इसमें हो जाएगा ब्रेन एब्सेस, सॉरी कोगुलेटिव नेक्रोसिस में हो जाएगा ब्रेन। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जो है उसका एग्जांपल होगा ब्रेन एब्सेस। इसके अलावा जो थर्ड टाइप का नेक्रोसिस है उसमें मैंने बात किया टीबी इन्फेक्शन हो गया। इसके अलावा हिस्टोप्लाज्मोसिस में भी हमें देखने को मिलता है केजियस नेक्रोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस। So this was all about the necrosis. We have seen about its various type. Other type will be seen next lecture. So hope guys you will like this. Thank you so much guys.